after the listing in a public. I am very pleased to be here today as I am getting an opportunity to speak directly with our shareholders, investors, institutions after the IPO of the company. I trust and hope you and your families are doing well, fit and fine, and perfectly all right. I am delighted to share my thoughts on your company's performance in financial year 23-24, a remarkable year in the history of Ratnaveer Precision Engineering Limited. On the September 11, 2023, Ratnaveer Precision Engineering Limited debuted on the public markets, and company's IPO was tremendously success. The overwhelming response to the IPO and this success is a testament to your trust, confidence in our vision, value propositions, and the faith to the company and the company's promoters. Your company's financial performance in the last few years has been first financial year 23-24, total operating revenue increased with 24.10% year on year, reaching to 479 crores to 595.38 crores. Total operating EBITDA increased to 21.23% year on year. That will increase from 47 crores previous year to 57.04 crores in the last years. Our revenue from operations has been grown at 18.28% compounded annual growth rate, with operating EBITDA going at 25.18% in each year. Profit before tax was up to 27.29% year on year to rupees 31.09 crores. These results reflects our strong operational efficiency, our commitment to creating our value for our shareholders. Our focus is on launching the new products, launching the new SKUs faster and delivering the great customer experience. Your company is at forefront of this transformative change, actively working with the customers to integrate the systems in engineering and the value engineering, optimize the product development time to time and cost efficient, and develop the value-added products to deliver the great experience. Your company's commitment to community service is steadfast. Through the CSR initiatives, we have been positively impacted to the society. We are dedicated to providing education, skilling opportunities, helping our communities to live better lives. As I look ahead, I'm more optimistic than ever about the enormous opportunity ahead of us. The global manufacturing industry will continue to be transformed by the move towards the value-added products, and your company is the best positions partners with many of these companies as they leverage technology to secure their future success. I extended my deepest gratitude to all the shareholders whose trust and support have been instrumental in our achievements. We remain committed to leading our industry in stainless steel and value-added products. The board and the management is pursuing a strategy to grow the business by developing our capacities in stainless steel washers, tubes and pipes, finishing line, solar roofing components, auto components, and furthermore value additions and the precise sheet metal components. Other value-added products such as clips and the soft started to the year due to the competitive headwinds persisting in the bottom of the pyramid segment. The international business have delivered a moderate growth quarter-on-quarter basis, driven by the silent and the more broad-based across the European markets. Companies have a vision to grow with the 27 to 28% of CAGR growth in coming years. Company also want to service the sector of automobiles, large transportation, railways,
aerospace and defense very aggressively. Company is achieving the many orders and potential orders to be there, and the long-term contracts also will be there. With the high value addition of the items, clips and pipes, and clips and the washers and the fasteners categories. In fasteners categories, company will be under the one roof. All the fastening solutions can be provided. So company have been on long-term plans also to reduce the overall debt into the next 3 years, and also have inorganic drives by acquisitions of the companies to growth model, the road model for the next growth of the company. Company is also looking to the contract manufacturing globally, and company have been working towards this very aggressively. So overall, the company having a company and the promoters and the board are committed for the growth. Growth engines can be handled with reducing the debt as well as to the acquisitions, and also to the contract manufacturing processes which can be converted and transform the company into the next height into the next 3 to 5 years. The company have a clear visions, transparent roadmap, and the clear deadlines to meet and the committed to achieve the targets. Company is actively strengthening the presence in the key international markets, contributing the significantly revenue into the growth. Moreover, it is focusing and developing the new revenue streams for the pipes divisions as well as to the other forward integration processes. A move that promises exciting the future prospects. I will shortly hand over to the Swati, but before that, I would like to place on record my thanks to senior executive team. Company has been already issued the preference shares और कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर्स का जो इश्यू हुआ है उसके अंदर में कंपनी के प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस और कंपनी पे जाने का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर ने भी अपने फंड कंपनी के अंदर में इन्फ्यूज किया है. टोटल 95 करोड़ का फंड रेस है, जिसमें 29 करोड़ प्रमोटर के एंड से है और 65 करोड़ प्रेफरेंस शेयर के अंदर में है. अभी तक उसका जो कंपनी के प्रमोटर्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी पैरेलली एनएससी के एक्सचेंज के अप्रूवल में है, इसके लिए वो साइट पे दिखाई नहीं दे रहा है. बाकी कंपनी के साथ साथ में प्रमोटर ने अपना फंड यूज किया है और फंड इन्फ्यूज किया है कंपनी के अंदर में. सो देयर इज नो एनी क्वेश्चंस टू रिड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ द कॉन्फिडेंस इनटू द कंपनी. नंबर 1. नंबर 2, द फंड रेस फॉर द कंपनी इज अ प्लान्ड एक्टिविटी. एक ग्रोथ मॉडल को अडॉप्ट करने के लिए फंड रेस टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए विद परमिशंस ऑफ द बोर्ड, एनएससी अप्रूवल एंड प्रॉपर रेगुलेशंस के साथ में एंड शेयर होल्डर अप्रूवल के साथ में ही हम लोग आगे बढ़े हैं. सो दिस इज द पॉइंट. जो आपका पहला क्वेश्चन था कि जो कंपनी का कॉन्फिडेंस और नहीं रहा, ऐसा है नहीं. और वो भी जो रिडक्शन हुआ है वो 3%, 3.70% से हुआ है. वो 10% शायद आपके पास में करेक्ट फिगर नहीं है. तो इम्पोर्टेंट है कि साथ में प्रोमोटर ने ऑलरेडी इन्फ्यूज कर दिया है फंड, तो इट कैन बी ओके फॉर दिस. नंबर 1. नंबर 2, आपका ये कहना है जो ईएसएम जो है वो ईएसएम इज अ एक्सचेंज का एक मैकेनिज्म प्रोसेस है कि कुछ पर्टिकुलर साइट्स के अंदर में अगर ट्रेड और ट्रेड वॉल्यूम्स अगर कुछ ज्यादा होता है तो उसको कंट्रोल करते हैं. वो कंपनी के अपनी पॉलिसी या कंपनी के अपने किसी के भी हाथ में नहीं होता है. वो ऑटोमेटिकली सिस्टम ड्रिवन होता है और सिस्टम से ही लॉक होता है और सिस्टम से ही अनलॉक होता है. तो आई थिंक कंपनी हैज बीन परफॉर्म इट वेल इन द लास्ट 1 year ऑफ द टाइम. कंपनी हैज बीन गिवन द 100% more activities over there to the investors, and parallelly that's कि जो सिस्टम ड्रिवन और रेगुलेटरी ड्रिवन है जिसके अंदर में कंपनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट या कंट्रोल नहीं होता है. इसके लिए ईएसएम के लिए हमारा कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है. और अगर आप देखेंगे कि इन्वेस्टर्स की जो क्वांटम है वो कंपनी के साथ में जब आईपीओ किया था तब 18,000 शेयर होल्डर्स थे और आज 55,000 प्लस शेयर होल्डर्स कंपनी के साथ में है. तो हम लोग यही समझते हैं कंपनी के ऊपर अपना ग्रोथ और कंपनी के ऊपर ट्रस्ट, फेथ एंड कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और ये लगातार बढ़ता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है. नंबर 3, अबाउट द सीएस एंड द कम्युनिकेशन पार्ट, वी हियर विद टू टेल यू
कि अगर आपका ये कोई ग्रीवेंस, अगर कोई पॉइंट है जिसको अगर एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, तो वी कैन बी डिटेलली चेक ऑन टू दिस पॉइंट, एंड हम कोशिश करेंगे कि इसका कम्युनिकेशन और बेहतरीन हो, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम हमारे यहाँ पर जो ट्रैक है उसके अकॉर्डिंग टू वी आर बीन रेसिप्रोकेटिंग एंड कम्युनिकेशन इज अ बेस्ट, बट फिर भी there is a one of the grievance, we can be noted this point and can be correct at ourselves, और इसका improvement आने वाले भविष्य में और बेहतरीन रहेगा. That is what I can be confirmed to you. Please. Thank you, sir. I now invite speaker number 2, Mr. Manjit Singh. Hello, Chairman sir, can you hear my Yes, voice? sir. You are in the panel. You हाँ must बिल्कुल मंजित enable your सिंह, video कैसे हैं सर? and speak now. Chairman sir, first of all, good evening to you, all the board of directors, all the staff of our Ratnaveer Limited and my co-fellow shareholder. Chairman sir, जिस तरीके से आपने अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में हमें कंपनी के बारे में बताया, इससे सर हमें क्लियर विस्तार होता है कि आने वाला जो हमारा फ्यूचर है वो सर एक ब्राइट फ्यूचर है. और सर आप लोग जिस तरीके की मेहनत कर रहे हैं सर, इन्वेस्टर को सर एक एक रिटर्न देने के लिए सर, वो एक काबिलियत तारीफ है. और सर हमें पूरा विश्वास है कि आने वाला जो हमारा फ्यूचर है, जिस तरीके से जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी में कर रखी है, उसको सर आप एक अच्छे से अच्छा रिटर्न देने के लिए पूरी की पूरी मेहनत कर रहे हैं, ये सर हमें क्लियर दर्शा रहा है. बाकी सर हम यही कहना चाहेंगे सर कि हम भगवान के आगे यही कहना चाहेंगे कि हमारी कंपनी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, और हमारी कंपनी को अगर तरक्की मिलेगी तो सर हमारी इन्वेस्टमेंट को अपने आप तरक्की मिलेगी. बाकी चेयरमैन सर, जिस तरीके से आप जिस तरीके से शेयर होल्डरों का ध्यान रखते आए और आपके सेक्रेटरी डिपार्टमेंट और मॉडरेटर ने जितने आराम से हमें आपके सामने बोलने का मौका दिया, सर हम इन लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे. थैंक यू चेयरमैन सर, थैंक यू सो मच. Thank you, Manjit Singh. I would be grateful and thankful to reciprocate all your kind words. और आपके ये वर्ड्स अपने हमारे सभी के लिए, कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स के लिए एक ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद रूप है. और हम सभी लोग उसी शुभकामनाओं के साथ में अपनी मेहनत करके कंपनी को किस तरीके से और प्रोग्रेस और ग्रोथ दिया जाए, उसके तरफ बिल्कुल सिंसियरली काम कर रहे हैं. और आने वाले समय के अंदर में समय टू समय, टाइम टू टाइम हम लोग टच में रहते रहेंगे, और इसमें हम लोग आगे बढ़ते जाए, इसी उम्मीद के साथ में आपकी शुभकामनाओं के लिए खूब खूब धन्यवाद. Thank you, sir. I now invite speaker number 3, Mr. Kush Gangar. You are in the panel, sir. You may enable your video and you can speak now. Hello. Yes, Mr. Kush, please. यस सर, मैंने मेरे क्वेश्चन सर भेजे हुए हैं. आई हैव ऑलरेडी सेंड माय लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस. अगर आपके पास है, अगर आपके पास है तो मैं रिपीट टू वांट दैट कि वन बाय वन वी कैन बी आंसर टू योर क्वेश्चंस. और यस यस यस, अगर आप मुझे अगर वो क्वेश्चंस पे आंसर दे दे तो दैट वुड बी ग्रेट सर. थैंक यू. ओके, सो नंबर वन, दैट्स ओवरऑल आपका ये जो एक जो 5 क्वेश्चन है या 6 क्वेश्चन है, उसमें से 3 क्वेश्चन एक कॉमन है कि हम किस तरीके से नई प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे, क्या नई प्रोडक्ट के लिए हमारे पास में सफिशिएंट ऑर्डर्स और ऑर्डर बुक की कमिटमेंट्स है, क्या आपका एग्जिस्टिंग जो सप्लायर है वो किस तरीके से हम लोग कॉम्पीट कर पाएंगे. मेरा ये कहना है कि हम लोग ने ऑलरेडी 22 साल से कॉमन बिजनेस ऑफ द सर्कुलेशन एंड फास्टनर्स के अंदर में है. वॉशर्स के लिए वी आर द मार्केट लीडर ओवर दैट. पैरेलली हम लोग जो एक एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ वॉशर्स को लेकर चल रहे हैं, जहां पर एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ वॉशर्स के लिए हमको सिर्फ कस्टमर्स का जो पीटीआर है उसको ऑलरेडी हम लोग ओवरऑल कर चुके हैं, और अभी नाउ हमें सिर्फ एक्सटेंडेड प्रोडक्ट्स को एनहांस करना है. ऑलरेडी हमारे पास में प्रोसेस और वर्बल कमिटमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्स आर बीन अवेलेबल. ट्रायल ऑर्डर हम लोग ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुके हैं. तो आपके जो ये क्वेश्चन है उसमें हम किस तरीके से सर्कलिप के बिजनेस के लिए जाएंगे वो बड़ा है. सर्कलिप के बिजनेस के लिए इंडिया से हम लोग शायद पहले होंगे जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं. इसके लिए हमें किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं करना है. हमें जो सब्स्टिट्यूट करना है वो यूरोपियंस एंड द यूके मैन्युफैक्चरर्स के साथ में है, जहां पर हम लोग दे आर द वेरी एक्सपेंसिव ओवर देयर. तो उसके सामने हमारा प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है, लेकिन हमारी चैलेंज जो भी है वो है कंसिस्टेंट सप्लाई करना, कांस्टेंट डिलीवरी देना और जीरो प्रोडक्ट इफेक्ट देना, जिसके लिए हमारी टीम, हमारे जूनियर्स टीम, हमारे सीनियर मैनेजमेंट, हमारे टेक्निकल टीम्स आर बीन क्वाइट कैपेबल इनफ टू सप्लाई सच काइंड ऑफ द प्रोडक्ट. आपका एक ये क्वेश्चन था कि हम लोग जो 100 करोड़ का कैपेक्स लेके चल रहे हैं उसके लिए क्या हमारे पास में सफिशिएंट टेक्नोक्राफ्ट्स, इक्विपमेंट्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स इन द टेक्निकल टीम्स अवेलेबल है. तो मेरा ये कहना है कि हम लोगों ने बिफोर आईपीओ अनाउंस किया था कि हम 106 करोड़ का कैपेक्स करेंगे.
जिसमें फर्स्ट 46 करोड़ और सेकंड फेज में 60 करोड़। 46 करोड़ का कैपेक्स ऑलमोस्ट 80% तक कंप्लीट हो गया है, विद इन टाइमलाइन हो गया है, और अक्टूबर एंड तक में हम लोग अक्टूबर एंड नवंबर फर्स्ट वीक तक में प्रोडक्शन का पार्शियली स्टार्टअप भी और प्रोडक्शन के रूप में हो जाएगा। सो वी हैव इनफ टेक्निकल पीपल विद अस who are been handling this project very comfortably and very confidently, और we are been just execution of this project and very soon, and बैलेंस जो ग्रोथ है वो 60 करोड़ का, जिसके अंदर में हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट एक्सपांशन कर रहे हैं और कैपेसिटी एक्सपांशन कर रहे हैं, जिसमें अगर हम लोग को नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स ऐड करना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस करना है और आगे बढ़ना है। वी हैव इनफ कस्टमर स्ट्रेंथ एंड ऑर्डर बुक स्ट्रेंथ, और मार्केटिंग नेटवर्किंग हमारा बहुत पावरफुल है, और जो सालों से करते आए उन्हीं कस्टमरों को एक एक्स्ट्रा कैपेसिटीज के साथ में बढ़ना है। तो कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर्स के लिए कोई भी क्वेश्चंस अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं, मतलब मैंने। और आपका ये कहना था कि आउट ऑफ 725 करोड़ ऑफ दिस ईयर्स ऑफ द टॉप लाइन, वो कितना एक्सपोर्ट्स में जाएगा और कितना डोमेस्टिक जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग ने ऑलरेडी इसका क्वेश्चन एंड आंसरिंग बिफोर आईपीओ, इन बिटवीन ऑफ आईपीओ एंड मेनी टाइम ऑफ द डिस्कशन दिया हुआ है कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 25% के आसपास हमारा एक्सपोर्ट्स में जाएगा और 75% डोमेस्टिक बिजनेस में जाएगा। एज सुन एज वी आर बीन ग्रोइंग टू दिस, आने वाले 3 साल के अंदर में हम लोग करीबन 60% डोमेस्टिक एंड 40% एक्सपोर्ट के तरफ रहेंगे। तो मिस्टर घोष, आई थिंक क्वेश्चंस आर बीन कवर्ड अप जो मेरे पास में है। अगर कुछ रह गया हो या कुछ समझना हो तो बता सकता है। Thank you, sir. Now I invite speaker number 4, Mr. Kaushik Shavkar. You are in the panel, sir. You may enable your video and you can speak now. Hello, I'm audible? Yes, Kaushik, please. Yes, sir. Respected sir and distinguished guests, good afternoon to all. It is truly an honor to stand before this national gathering today. I extend my heartfelt gratitude to entire board for granting me opportunity to be part of such a significant event. First and foremost, I would like to commend our chairman, Mr. Vijay Sangvi, for his comprehensive presentation on state of our company. Sir, your insight was so thorough that I find myself with no question to ask. However, as speaker, it may go to inquire. Therefore, only concern that is out of curiosity is, could you please share the planned capital investment for the current fiscal year and the expected revenue out of it, and how much employment will be generated additionally? And last, could you inform us about the contingent liability as a percentage of reserves? Before I conclude, I want to express my sincere gratitude to the entire secretarial team, especially Mrs. C.A. Swati Sharda and her team for the efforts in connecting with me. I have always been deeply impressed by company's CSR initiative, particularly those dedicated on supporting specially abled persons. This effort demonstrate our company's unwavering commitment to making a positive difference in the life of those who need it the most. On a personal note, I am confident that Mr. Vijay Sangvi and CS Mrs. Swati Sarna will consider my humble request to work together on certification audit, including Form 15CB. I trust they will see the merit in this collaboration and give it a thoughtful consideration. Sir, as a co-owner, I believe that we have a right to visit our factory and gain first-hand insight into how our company operates. I urge the management to consider organizing a site visit for shareholder speaker. Furthermore, I believe a separate fund should be created for shareholders' expenses as the money belongs to co-owners and should be used for benefit. Perhaps we could also distribute memento to speakers, shareholders during festival from the corporate created. And on lighter note, as we embrace virtual meeting, maybe we could keep things lively
next time with a virtual high-fi competition. Before I conclude, I would like to leave with a thought. वो कहते हैं कि जिंदगी को जीना आसान नहीं होता. वो कहते हैं कि जिंदगी को जीना आसान नहीं होता. जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है. कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नजरअंदाज करके. So don't ever think that my way is highway. Be humble. In my view, humility is the strongest character in a human being. Thank you all for your patience hearing. Thank you, Kaushik. Thank you so much. I would be heartfelt and grateful and thankful for your such a wonderful conclusions of the entirely question and answers to cover up. So I can just tell you that the expansion plan for the companies has already been announced, and time to time it would be also reported. So for the expansion plan would be for this fiscal year is a 46 crores, and this will be ongoing, and 80% would be completed, and the 20% remaining will be completed into the next 6 to 8 weeks. So this will be one of the plan. Number two, you also given the wishes and the kind words to the management and the boards. The management and the board will be overwhelmed with your words and the kind support to all the investors, including you. And we have been working towards the very sincerely and effortless that how the company can be growing in a vertical way. Number three, your questions for the visiting the plants, then you have to be follow the procedures to the company and just coordinate with the Swati and fix up the appointment, the time, and then we could be allow you to do the visit. For the expenses to be reimbursed, that would be a policy matter. So whatever the policies will be there, Swati can be answer to you for this point. At this moment on this platform, I could not be answered for the policy matters. And number four, that's about the wisdom and the management and the controls to the company. We could be very focused and committed towards that. And the company would be governed with on the policies and the regulations. And scope of the improvement is always available. We could be learned it, we could be achieved it, and we have been very focused to grow up the company to the next level. Thank you, Kaushik, for all kind of your words. सबको जीतना है और हम लोग सब मिलकर जीतेंगे. Hi. Good evening to all attending the AGM. Thank you for the opportunity, and I must acknowledge the good work. Govind, if you speak some loudly, then it could be audible, please. Is this better, Vijay bhai? Yes, it's better now. Yeah. So I want to thank you for the opportunity and also acknowledge the good work done by our company secretary team, Swati Sharda. I was surprised to hear one of our fellow speaker shareholder was not happy, but my experience has been very good and want to put that on record as well. Also want to tell you that I have voted in favor of all the resolutions. Very happy with the way you are progressing. And very, very happy with our company's performance. Once again, thank you, Chairman, Managing Director Vijay bhai, the entire leadership team, Board of Directors, hardworking employees, and strong set of shareholders. I wish each of us very, very best. I want to ask you, Vijay bhai, about the strategic plan that we have for the IPO fund. You talked about CapEx, but if you can expand, that will be good in terms of how we utilize that for higher margin products. I also want to know about your vision to get dividend paying situation. It is very important for our company to reduce debt, increase profits, and share the increased profit with fellow shareholders, including you as promoters. I would also like to call upon
you to enable a plant visit to fellow shareholders who are interested. Once again, want to thank you all for your leadership and entire effort. Hope to hear from you on these queries. Thank you, sir. Yes, thank you, Govind bhai, for your such a nice, elaborated questions and kind words to the company and the board. We have been very enthusiastic and energetic and really motivated when we heard such kind of the words from our investors. So thank you so much. And you have to be appreciate the board and the workforce team and the entirely the team of the Ratnaveer in such a way that we all are been very really very motivated. Now I can be come to the questions of the IPO funds. So IPO funds will be used and as per the objectives, and the care rating agency as an external agency who have been monitoring agency who have been already monitored it and certified it for this. For your reference, that it can be well within the guidelines and the objectives which can be mentioned into the final RHP, the objective of the IPO. Parallelly, that the growth engine of the company is products. Each company has been already been expanded. If you see the results of the last year of the September to till now and the year on year, the company's bottom line would be increased. In my speech, I have been already concluded that the 25% plus profit can be booked. The first quarter itself, you have seen that the company has been achieved a 55% of the profit into the PAT. So that would be look that the funds can be used into the only into the value-added products, capital expenditures, development of the products, growth of the company, and the powerful executions will be done by the senior management to the company. Parallelly, that's your answering for the debt reduction, which I already be covered up in my speech also. That company has been plans to reduce the level of the debt into the next 3 years. Company into the journey of to growing and the growing company, and parallelly that's the whatever the internal accruals would be arising and the cash flow would be arising, it will be used for the pay of the debt. The short-term plans, we have been already into the plan for the company to achieving debt reduction into the very shortly. So in the 3 years of the plan, we are trying to moderate and extended our level best to reduce the debt and the cash flows. Parallelly, that's a visit of the plan that already I already answered. That you just email to the company secretary. She can be coordinated the visit, and we are welcome to the investors who want to visit the plant and facilities which are being available. Team and can be coordinated their visits. So that is not an issue. You are been most welcome over there, and this is what I can answer to your point. And thank you so much for your kind and the blessed words always. Thank you, sir. With this, we conclude with the speaker shareholder queries. I now hand over to Company Secretary.